माननीय सभापति जी, इस ऑर्डिनेंस और बिल के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। मैं उन सबका आभारी हूं। कायदे थे तो ये विस्तृत चर्चा पिछले सत्र में होनी चाहिए थी, लेकिन इस बिल के माध्यम से इस सदन को अवसर मिला इस चर्चा करने का। ये लोकतंत्र के लिए और चर्चा की दृष्टि से इस सदन के लिए भी एक अच्छा कदम है। डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लाभ क्या हैं, कुछ लोगों ने कहा उसकी तकलीफ क्या है, इन सब विषयों पे मैं उत्तर के दौरान चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पूर्व श्री प्रेमचंद्रन ने और श्री शशि थरूर ने कुछ कानूनी विषय इस संदर्भ में उठाए हैं। उनका कहना यह है कि सरकार पहले एक नोटिफिकेशन लेकर आई, आज ऑर्डिनेंस या बिल लेकर आ रही है और यह प्रक्रिया कानून के विपरीत है। यह सच है कि यह तीसरा उदाहरण है इस देश में डीमोनेटाइजेशन का। 1946 में जब हुआ था तो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी। वो डीमोनेटाइजेशन सफल इसलिए नहीं हुआ कि उसमें कुछ अपवाद एक्सेप्शंस कर दिए गए थे। जो उस वक्त रॉयल्टीज थे उनके पास जो करेंसी थी उसके संबंध में, और कई लोगों ने जो साधन थे उनके पास उस रास्ते के माध्यम से अवैध को वैध करने का प्रयास किया। 1978 के साथ तुलना की जाती है जब भी ऑर्डिनेंस लाया गया था। 1978 में और 2016 में एक बुनियादी अंतर है। 1978 में जो हाई डिनोमिनेशनल करेंसी थी वो केवल 80 करोड़ रुपए थी। तो जब मोरारजी भाई की सरकार ने यह निर्णय किया तो वो निर्णय केवल 80 करोड़ रुपए को डिमोनेटाइज करने की दृष्टि से किया था। और उस डिमोनेटाइजेशन में फिजिकल डिपॉजिट होता था, उसकी तस्वीरें भी आज मौजूद हैं, और लगभग 20% करेंसी थी जो वापस नहीं आई थी। और उस वक्त करेंसी की जो दर थी, जो हाई डिनोमिनेशनल थी, वो 10,000 रुपए का नोट तक होता था और नोट के पीछे हस्ताक्षर करने होते थे जब भी कभी उसका ट्रांजैक्शन होता था। इस बार जो सरकार ने कदम उठाया, 8 नवंबर को सेक्शन 26(2) के तहत ये ऑर्डर पास हुआ। And since Mr. Premchandran raised this question, I'll just briefly touch upon this in English so that he's able to follow it. I respectfully, completely disagree with his interpretation. His interpretation is based on not reading two phrases in section 26. He makes out a case that under section 26(1), every banknote shall be a legal tender and the government of India will guarantee it. And he says, therefore, what you have done under a notification could not undo this absolute character of 26(1). Now, if you turn back to section 26(1), it starts with the most crucial phrase, subject to the provisions of subsection 2, every banknote shall be a legal tender at a place in India and in payment or on account of the amount expressed therein and shall be guaranteed by the government of India. The crucial words are that section 26(1) is subject to the provisions of section 26(2). And when it is subject to the provisions of section 26(2), the provisions of section 26(2) will prevail. 26(2) itself says, on the recommendations of the central board, the central government may by notification in the Gazette of India declare it with effect from such date as may be specified
that any series of banknotes of any denomination shall cease to be a legal tender. So if, after receiving the recommendation of the central bank, the government of India decides that a currency ceases to be a legal tender, then that cessation of legal tender is an order that can be passed under section 26(2), and to that extent, 26(2) will prevail over 26(1), because 26(1) is subject to the provisions of 26(2). And on the 8th of November, after receiving the recommendation of the Reserve Bank of India, Central Board, the Government of India, through a decision of the Union Cabinet, took a decision that high denominational currency of rupees 500 and 1000 shall cease to be a legal tender. Now, this cessation took place on the 8th of November, and a facility was given, because when you cease to be a legal tender, you can't transact in it, except to the limitation provided, which I will deal with separately, which is the second argument of Premchandran. So it ceases to be a legal tender. You can't go and buy goods, you can't hire services, as far as this high denominational currency is concerned. But then the liability of the Reserve Bank to pay on demand continued to remain. The guarantee of Government of India that the Reserve Bank will pay you will continue to remain. And that is why, with effect from the 10th of December, 9th being a holiday, people queued up to the bank to deposit this currency in their accounts, so that they could get exactly the same credit in their accounts for the amount of currency that they deposited. Now, this facility of deposit was granted till the 30th of December. Post 30th of December, what happens to this order of cessation? Now, this limited facility in the grace period continues, and the Reserve Bank had to announce on such terms and conditions, which they announced, that people who were not in India, either NRIs or people who had gone outside the country, residents in India, they will be given a guarantee period. Now, either there would be some currency which is left over. No economy in the world survives with that seized currency to operate in the market. So when Mr. Saugat Roy says, what is the harm if I keep large quantities of demonetized notes with me? The harm is that if we went by your suggestion, it would be anarchic in character, because India would then have a non-legal tendered currency parallelly operating in the market. And no economy in the world allows possession of a parallel economy or a parallel currency which can operate in the market. And that is why the only currency which can operate in the market is the currency which the Reserve Bank of India has authorized. And therefore, once that grace period is over, this currency which is left over then has to cease to exist. And that is the reason why this ordinance is brought in, where the first limb of the ordinance is that the currency now, the high denominational currency, the liability of the Reserve Bank will cease to exist. And consequently, under section 26(1), when the liability ceases to exist, the guarantee given by the Government of India will also cease to exist. That is the first purpose of this ordinance. Now, this ordinance, therefore, let alone being in conflict with the 8th November notification, is a natural corollary or a consequence in a series of events which is to follow. The third limb is that possession of this currency, except to the extent it is permitted for some antique value or for some collector or for some historical or scientific research,
That currency only in those numbers, 5 or 10 notes which are permitted, can be kept. Possession of the rest will be an offense for which you can be penalized, because if you keep large quantities, then you are allowing the existence of a parallel currency in the currency market, which is something which cannot be allowed. The second legal argument which is raised is, once it ceases to be a legal tender, then in the month of November, how did you, for various goods or services, medicines or payment at some for railway stations, etc., or hospitals, you allowed the seized currency to operate? Under what power did you get it? Because it has ceased to be a legal tender. There again, Mr. Premchandran does not read the whole section, section 26.2. 26.2 says, when it says that it shall cease to be a legal tender, and then there is a subsequent amendment to the law which was brought in 1951 to the 1934 Reserve Bank of India Act, which says, save at such office or agency of the bank and to such extent as may be specified in the notification. So the extent to which it ceases to be a legal tender under section 26.2 can also be specified in the notification. And that is why the second notification that you refer to says that this cessation of legal tender has taken place, except to the extent that for hospitals or for paying your toll or for buying medicines or for some specified purposes or railways, you can use it up to a specified date. Now this variation is something which is permissible in section 26.2. So with respect to Mr. Premchandran, his two legal submissions are completely based on ignoring the existence of two phrases. First, subject to the provisions of subsection 2 contained in 26.1, and secondly, to the extent as may be specified. So the extent of cessation of a legal tender itself can be specified. So the third legal argument is what Mr. Shashi Tharoor raised. And this is, I have heard from various spokespersons of the Congress party. And Mr. Tharoor's argument is that there is no provision in the RBI Act. This is my money. It is my bank account. How can I be restrained, and where is the power under the RBI Act to have a graded restraint, which gradually has been relaxed from time to time? This power of the Reserve Bank is contained in section 35 capital A. Mr. Tharoor is not here, so somebody may inform him so that he doesn't use this argument again. Is contained in section 35 capital A of the Banking Regulation Act of 1949. Section 35 capital A says power of the Reserve Bank to give directions. So where the Reserve Bank is satisfied in public interest, in the interest of banking policy, or to prevent affairs of a bank being conducted in any such manner, or to secure proper management, etc., it is necessary to issue directions to banking companies generally, or to any banking company in particular. It may from time to time issue such directions as it deems fit, and the banking companies or the banking company, as the case may be, shall be bound to comply with these directions. So in case it is in public interest, this could be a general direction to all banks. It could be in the interest of banking policy. It can be in relation to a particular bank when its activities are prejudicial to the conduct of business. Assuming, let us forget demonetization, a particular bank is sinking and there is a run on that bank. And if there is a run on that bank, the Reserve Bank under 35 capital A passes directions so that to prevent a run on the bank, that this is the limited nature of withdrawals that can be made during 1 month or 2 months. Such directions, innumerable directions have been issued. So during the period of remonetization, it has been done in dozens of cases.
And I can't understand why this argument is being raised for the last 3 months when the clear power under Section 35 capital is there. Now, how did the system operate in this case? India is a unique example, and that is why I respectfully disagree with a large number of economists. Those economists have all survived and built their models on basis of societies, firstly, which are tax compliant. Secondly, on societies where the percentage of cash currency in relation to the GDP is extremely limited, where the percentage of high denominational currency is very modest. Now, India is one example where high denominational currency is 86% of the total currency. And 86% of the total currency being high denominational, that is 500 and 1,000, is something exceptional. It doesn't compare with comparable models anywhere in the world. Secondly, you have economies between 2 to 6% of their GDP is the paper currency. India is amongst the highest in the world, where the ratio of paper currency to the GDP is 12.2%. Thirdly, when you speak member after member on the virtues of cash currency, and I must say this is a great disappointment that in 2017, where technology is taking the world in one direction, we are still giving virtues of dealing in cash and dealing excessively in cash. Cash, sir, has a lot of vices. Parents will always check a little child from dealing too much in cash, because we know that cash has its vices. Let us not forget that any cash economy where a lot of cash operates in the system, the first thing that happens is that cash is anonymous. It doesn't leave footprints. So nobody knows whose cash is being transacted in the economy. Let us, all of us, and I think Mr. Pappu Yadav made a valid point when he spoke, जब उन्होंने कहा कि राजनीति में कौन सा पैसा आ रहा है. आप ठीक कह रहे थे. आज इस देश की क्या व्यवस्था रही है? व्यवस्था ये रही है कि अगर मुझे जाकर संपत्ति खरीदनी है तो एक स्वाभाविक आचरण था कि इतना कैश में दीजिए, इतना चेक में दीजिए. अगर मेरा व्यवसाय है तो इतना कच्चे में होगा और इतना पक्के में होगा. चुनाव के लिए पैसा लेने जाएंगे तो किस रंग का पैसा मिलेगा, ये वही है जो आपने अभी यादव जी ने अभी बतलाया. और गगोई जी चले गए, लेकिन जब ये हो रहा था तो उन्हीं का उदाहरण ले लूं तो धृतराष्ट्र देखते रहे 70 साल तक. The Indian normal was that business and transactions are to be conducted in this manner. Now, what does a prime minister do? Does he say, let me accept this normal, there is great virtues in cash? Sir, cash, आपने कहा गरीब को क्या लाभ होता है? हमारे, the honorable member who spoke last said, what is the advantage to the poor? Cash economy creates an unfair advantage against the poor, because the wealthy and the tax evader gets an unjust enrichment because he has been dealing in cash. The man who deals in cash obviously doesn't pay taxes. When he doesn't pay taxes, the state is poorer. I presented the budget a few days ago. We have to borrow lakhs and crores of rupees. Every state government has to borrow lakhs and crores of rupees because we indulge in deficit financing, because we know that the kind of taxes that the states governments are getting, the kind of taxes the central government is getting, is only a minuscule fraction of what we are entitled to.
And that is because of cash economy, and that is because of the fact that for 70 years, the very thought that you have been proposing is a thought which promoted cash economy, which saw the virtues of cash economy. So from property to business to lifestyles to luxury to elections, cash economy had polluted every stream of the system. देखिए, फार्मर की चिंता आप मत कीजिए, फार्मर अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज जब आपने कहा कि किसान को बहुत नुकसान हुआ है, तो मैं आपको बतला दूं, फार्मर के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं है और कभी लगने वाला भी नहीं है। तो फार्मर अपना पैसा चाहे घर में रखे, चाहे जेब में रखे, चाहे बैंक में रखे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इसलिए किसान के पास तो जो साधन थे उसका असर नहीं हुआ। किसान केवल आपने नारा बना लिया, और असर यह हुआ कि जब डीमोनेटाइजेशन का असर पीक पर था नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो रबी की फसल इस साल की पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा सोइंग हो गई। सो हाउ इज इट दैट द रबी सोइंग दिस ईयर वाज 7% मोर देन लास्ट ईयर? नहीं, बारिश के अलावा खाद भी चाहिए होती है, लेबर भी चाहिए होती है, बीज भी चाहिए होता है। अच्छे फसल का उम्मीद करिए सर। तो आप अध्यक्ष जी, हम एक बार इसकी व्यवस्था समझ लें। किसान का नारा इसमें मत दें, क्योंकि किसान के ऊपर टैक्स लगता नहीं है और लगने वाला नहीं है। तो किसान का बहाना ब्लैक मनी को जस्टिफाई करने के लिए मत दीजिए। किसान के पास जो पैसा है वो व्हाइट मनी है, क्योंकि वो उसके ऊपर वो टैक्स से मुक्त है, और इसीलिए किसान के ऊपर असर नहीं हुआ। क्योंकि किसान चाहे उसको जेब में रखे, घर में रखे, किसी अलमारी में रखे या बैंक में रखे, उसकी अर्थव्यवस्था पे इसकी वजह से असर नहीं होने वाला है। इस पर असर होने वाला उस पे है जिसको बैंकिंग माध्यम से अगर ये ट्रांजैक्शन करता तो टैक्स अधिक देना पड़ता। बैंक्स के अंदर साधन अधिक आते। जब बैंक्स के अंदर साधन अधिक आते हैं तो बैंक्स की क्षमता उस पैसे को ऋण के रूप में देने की बढ़ती है। When banks are loaded with money, the capacity of banks to lend also for growth also increases. But if money is existing outside the banking system, the banks are not in that position. क्योंकि ये जो डिपॉजिट्स आए हैं ये लो कॉस्ट डिपॉजिट हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है किसका असर होगा कि जब लेंडिंग के लिए पैसा ज्यादा आएगा, लो कॉस्ट डिपॉजिट आते हैं, तो थोड़ा उसकी ब्याज दर भी कम होती है, और ब्याज दर कम होने से आम नागरिक को भी लाभ होता है, उद्योग को भी लाभ होता है। और जब सारा ट्रांजैक्शन बैंकिंग व्यवस्था में आ गया तो राज्य को जो टैक्स मिलता है उसकी भी संख्या बढ़ेगी, जो केंद्र को टैक्स मिलता है उसकी भी संख्या बढ़ेगी। और इससे बेहतर इसका क्या उदाहरण चाहते हैं? अभी मेरे पास नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आए। नवंबर दिसंबर के आंकड़े आए और स्वाभाविक था कि डिमोनेटाइजेशन का असर था, कुछ क्षेत्रों में स्क्वीज था। अब हम केवल नारे के रूप में कहते रहें। Shashi Tharoor spoke at length how tourism has declined, but curiously more people flew in November and December by air compared to the previous months. 21.6% growth. No, bro, no, please. देखिए, कृषि की सोइंग बढ़ गई। No cross talking. कृषि की सोइंग बढ़ गई, एयर ट्रैवल बढ़ गया, और इस प्रकार का नारा दे देना कि फला संस्था ने कहा कि 40% मैन्युफैक्चर कम हो गया, 60% कम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का बेस्ट इंडेक्स क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का बेस्ट इंडेक्स होता है कि एक्साइज ड्यूटी कितनी मिली।
अब दिसंबर के महीने के मैं राज्यों के वैट के आंकड़े देख रहा था। एक्सेप्ट 2 main states, every major state, and the impact of demonetization in December was more than November, because in November some exceptions existed for old currency. In December they did not exist. Why is it that in the month of December the excise collection of the central government went up and the VAT collection of the states went up, except 2 major states? West Bengal is one of them. Delhi is the other one. So each one of your Congress-ruled states also the VAT collections went up. But Shashi Tharoor will say there was a 40% and 50% decline. If there was a 40% decline in manufacturing, there should have been a 40% decline in excise duties. There should have been a corresponding decline in the VAT. It is true, sir, that there are sectors which can be adversely impacted. The perishables can be impacted. Some luxury goods can be impacted. Some items of deferred purchases can be impacted. And that's a short-term impact. But at the end of the day, please understand what is the long-term object of this exercise. If you go in for a lesser cash economy, you are transacting through banks. और ये गलत फहमी ना रहे कि ये डिजिटल केवल अमीरों का है। आपने चौटाला जी कहा कि गांव में बैंक नहीं है। अब इसी बहाने जो नीति बदल रही है, मैडम Please listen. बैंक्स की लगभग 125 ब्रांचेस हैं। 1.25 लाख ब्रांचेस हैं। उसके अतिरिक्त कोई 1.25 लाख बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है जो गांव-गांव जाते हैं। 2,10,000 ATM मशीन्स हैं। उसके अतिरिक्त चले जाइए, अब उसका असर आप देखिए। आज सरकार ने 2015 में निर्णय लिया, हमने पेमेंट बैंक्स क्रिएट किए। अब पेमेंट बैंक्स के बाद आपकी हर टेलीकॉम कंपनी पेमेंट बैंक बन रही है। मैं एक कंपनी के उद्घाटन कार्यक्रम में गया, उनके 5 लाख स्टोर्स ओवरनाइट पैसा रिसीव करने वाले बन जाएंगे। पोस्ट ऑफिसेज जिनका काम समाप्त हो चुका था, जो खाली पड़े रहते हैं, आज 1,75,000 पोस्ट ऑफिस जिसका गांव-गांव तक रीच है, और 5 लाख उसके पोस्टमैन, वो लिटरली जिसको बैंकिंग एट डोरस्टेप कहते हैं, पोस्टमैन लेकर जाएगा। अब 1 सप्ताह पहले पोस्टल बैंक हम लोगों ने इनॉग्रेट कर दिया। सुनो भाई सुनो। अब जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, यहां कहा गया कि क्रेडिट कार्ड केवल अमीरों का है। अब मैं क्रेडिट कार्ड में नहीं जाता, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था जितनी देखी है इस देश में, हम वास्तविकता से कितना दूर हैं। कल्पना कीजिए कितने कार्ड हैं बाजार में, 75 करोड़। There are, Mr. Saugatrai, you are behind times. There are 75 crore cards. अब ये बात सच है कि उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो कार्ड को केवल एटीएम मशीन पे इस्तेमाल करते हैं। 3 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं, बाकी डेबिट कार्ड्स हैं। नहीं है आप सुनो भाई सुनो। उसके अलावा जितने ये ऑल्टरनेटिव एप्स आए हैं, जितने एप्स आए हैं, ई वॉलेट्स आए हैं, और भारतीय कंपनियों के आए हैं, आप भीम का इस्तेमाल कीजिए, No cross talking, हो please. जाएगा। आप इसके अलावा जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, कि केवल दुकानदार जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास मोबाइल के ऊपर एक इक्विपमेंट फिक्स्ड है। आप अपना आधार नंबर लीजिए,
आपका बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक्ड होगा, वो अमाउंट लिखेगा कितनी पेमेंट करनी है, आप अंगूठा लगाइए, पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। ये है आधार सिस्टम जो ऑपरेट हुआ। और आपको लगता है कि क्या हम इतना समय से पीछे हैं कि आज इस टेक्नोलॉजी के युग में, और ये टेक्नोलॉजी जो है आधार की दुनिया के किसी और देश में नहीं हुई, इसका पूरा प्रयोग और आरंभ भारत में हुआ। और मुझे तो लगता था कि आपकी सरकार कहती ये No, 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 please. No, no, he's not yielding. He's not yielding. No, no, please sit down. You see, the trouble with Mr. Karunakaran, the trouble with the Marxists is that they think that poor people will vote for them, therefore India must remain in poverty. The problem with Marxists is that you want to celebrate poverty. No, please sit down. Let's आप be very कृपया clear. बैठिए। करुणाकरण Let जी, us be please sit very down. clear. Nothing will go on record except the- finance minister's reply. You must be, I can assure you, you must be the only Marxist party in the world which is advocating the virtues of cash. No Marxist anywhere in the world would do that. I request the Honorable Finance Minister, can you say that in any country in the world that a citizen who deposits money, but there is restriction in withdrawing the money, can you find out any Such orders have been passed times under Section 35A of the Banking Regulation Act in India. Let us forget any other country. And therefore, sir, it was necessary. No, 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 no cross-talking, please. Sir, therefore, it was necessary during the remonetization period, once we are clear that we have to move towards a greater digitized economy, a lesser cash economy, quantum of cash would gradually come down. India will gradually expand into a digitized economy. Why can't workmen be paid by a digitized manner? If they are paid by digitized manner, their entitlement to social security will increase. Today, management will pay workmen only by cash and then save itself the onerous responsibility of social security. You should actually have been supporting this measure, which will go a long way to help the workmen. Why can't school... कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इसको भी समझना चाहिए कि देहात में किसानों की तो ये समस्या है, जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है। अरे जरा चुप बैठो भाई, क्या है? Please. तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, एग्रीकल्चर लेबरर्स है, और जो आज पेरिसेबल गुड्स लेके जाते हैं, उनको आज भी कैश की आवश्यकता है। तो आप ये कहेंगे कि आप वो प्लीड कर रहे हैं ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी रहने वालों के लिए, ये बात नहीं। तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक हो, लेकिन अब जो फिलहाल एकदम आप जो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए है इकोनॉमी का, उस पे आज जो फेस कर रहे लोग, उसको कैसा सॉल्व करना ये बताइए। एक नहीं, दूसरी बात क्या है, जब किसान, छोटे किसान मंडी में अपना सामान लेके जाते हैं, धान्य लेके जाते हैं, जो हमारे पास गंज कहते हैं, वहां पर अपना माल बेचते हैं, उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते कि सारे किसानों को देने के लिए, तो उस वक्त ये दिक्कत आती है। तो अगर आप ये कहेंगे नहीं, उसके पास ब्लैक मनी है, उसके पास व्हाइट मनी है, अगर ये कहते जाएंगे, उसकी हालत क्या होगी? उसको कोई ना कोई एक रास्ता आपको दिखलाना होगा। खड़गे जी, ब्लैक मनी को जस्टिफाई करने के लिए हम तरह तरह के कारणों का आविष्कार मत करें। और यह बड़ा स्पष्ट है, मैंने आपको पहले साबित कर दिया कि किसान का सहारा लेना बंद करें, क्योंकि किसान के पास जो पैसा होता है वो व्हाइट होता है, क्योंकि किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगता। चाहे किसान कैश में दे चाहे चेक में दे, उसके पास दोनों ऑप्शन है। कैश पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा,
लेकिन यही प्रयास है कि कैश की संख्या कम हो और लोग डिजिटाइज और चेक इकोनॉमी। स्कूल की फीस होती है, क्यों नहीं डिजिटल से ट्रांसफर हो सकती? स्कूल के टीचर को तनख्वाह मिलती है, स्कूल के टीचर को तनख्वाह मिलती है, वेतन एक मिलता है, लिखवाया दूसरा जाता है। ये होता है कि नहीं होता? और इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त करें। अब राजनीतिक दलों का पैसा, ये जितने भी क्षेत्र मैंने बतलाए, अगर इन क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास होता है तो किसी भी राष्ट्रीय दल का यह दायित्व था कि उसकी मदद करे, न कि कैश इकोनॉमी के गुणगान करने लग पड़े और इसको कहे कि बड़ी तकलीफ हो रही है, कैश चलने दो। उसमें जो दोष है वो गुणगान करने की बात नहीं है। Going to solve it. No, you listen to his reply. मैं कृपया बैठिए। अजय रंजन जी, प्लीज सिट डाउन। No, please sit down. Please sit down. Nothing will go on record except Honorable Finance Minister reply. अध्यक्ष जी, मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, मैं इसमें Nothing will go on record except Finance Minister reply. Sir, Please continue, sir. let me just clarify 2 or 3 things. This decision required a lot of courage, broad shoulders, and a lot of stamina even to take criticism. The fact that leadership lacked that is the reason why it has not happened for 7 decades. Now, obviously, every leader was scared of the consequences. The consequences will only be in the short run. But in the long run, if India can come out of this system, you should all have been in the forefront to support this particular change, because this change is morally and ethically a correct change. The cost-benefit analysis is, if India goes, the people who will suffer the most from this are those who managed to be evaders under the earlier system, who will now come under the tax net. Now, those are the people who are going to be affected. It was an unjust enrichment in favor of the evader. Cash had its anonymity. Today, when now this is a fascinating argument being raised, and some of the members raised it. How much money has come in, and the fact that a lot of money has come in means No, please listen. Ajay Ranjan ji, please sit down. No, not allowed. Please sit down. Sir, No, कृपया बैठिए। रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे हैं, कृपया बैठिए। Sir, it is obvious that after the amendment to the Income Tax Act that we made, and we made an amendment to the Income Tax Act that those who have made these deposits and will voluntarily declare it under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana will have to pay a certain amount of tax. The tax impact comes to about 60 to 65% because you get 25% back now and 25% back at a later stage after 4 years. And if you don't make use of that scheme until the 31st of March. No, please, no cross-talking. नहीं अधीर जी, कृपया बैठिए। It is not fair. और अगर आप 31 मार्च के बाद पकड़े जाओगे तो आपके ऊपर 80-85% लगेगा। ये योजना थी। केवल बैंक में पैसा डाल दिया तो गंगा जी का स्नान हो गया और वो सारा पैसा व्हाइट मनी हो गया। इस प्रकार की सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बैंक में पैसा डालने का असर यह हुआ कि जो पैसा टैक्सेशन और बैंकिंग सिस्टम के बाहर घूमता था, आज बैंकिंग व्यवस्था में आ गया। उस पैसे की गुमनामी समाप्त हो गई और उसका मालिक कौन था आज पता चल गया, और अब उस मालिक को टैक्स देना पड़ेगा। ये मत गलतफहमी मांगिए कि वो जो पैसा आ गया वो व्हाइट मनी हो गया। No, sorry, please. No, please sit down. अब इन्होंने, अध्यक्ष जी, कृपया बैठिए। अब इन्होंने
अब इन्होंने एक तर्क दिया, अभी अधीर जी कह रहे थे क्योंकि उनको जानकारियां बहुत कम रहती है इसलिए मैं बता दूं। नहीं, कृपया बैठिए अधीर रंजन जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मैं ये बता दूं, इसके तहत 60-65 या जो पकड़ा जाएगा 85, उस टैक्सेशन के ऊपर जो पैसा पकड़ा जाएगा जो गैर कानूनी आया, और 18 लाख लोग एक महीने में ऐसे डिटेक्ट हो गए जिनका इनकम प्रोफाइल और डिपॉजिट मैच नहीं करता। इससे पहले हम आईडीएस की स्कीम लाए जिसमें हमने कहा कि आप 50% डिपॉजिट कीजिए। फॉरेन ब्लैक मनी की स्कीम लाए कि आप 60% पे डिपॉजिट कीजिए। अब आदिर जी कह रहे हैं कि आपने एक सुविधा दे दी। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने क्या किया। 50%, 60% और 85% ये हम लोगों ने किया और हजारों करोड़ रुपए सिस्टम में उससे आए। एक 1996 में ये वीडीआईएस स्कीम लाए, 96 में। मैं आज दावा करता हूं कि वो टैक्स इवेडर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा और बोनांजा था। 1996 की स्कीम में आपने कहा कि एसेट की वैल्यूएशन की जाएगी 10 साल पुराने 1986 के रेट पे और 30% टैक्स दे दो। जब 96 में 86 की 10 साल पुरानी वैल्यूएशन पे 30% दो तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन बना 8%। यह आप लोगों की इस योजना थी और आज आपको लगता है कि भाई आप 60% और 80% ले रहे हो तो बड़ी रियायत कर रहे हो। और उस योजना में किसी ने पैसा जमा नहीं कराया। उस योजना में किसी ने पैसा कैश नहीं जमा करवाया। उस योजना में अधिकतर डेक्लरेंट्स जो थे वो हाउसवाइफ्स और माइनर चिल्ड्रन थे। क्यों? क्योंकि उनके नाम पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी या ज्वेलरी थी वो पुरानी डेट की वैल्यूएशन लेकर लोगों ने टैक्स जमा करा दिया। यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड था। मैं आज आपको चुनौती देता हूं, खड़गे जी, अभी मैं बैठ जाता हूं, आप बता दीजिए मुझे, आपकी 10 साल सरकार चली, एक कदम ब्लैक मनी के खिलाफ आपकी सरकार ने उठाया हो 10 साल में, एक कदम उठाया हो तो मैं बैठ के आपको आधा घंटा सुनने को तैयार हूं। अब मैं अब आपको बतलाता हूं कि मोदी जी की प्लीज मेंटेन द ऑर्डर। वेरी गुड। अध्यक्ष जी, मोदी जी की सरकार का 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी बनाओ। 26 मई 2014 तक आपने नहीं बनाई। मोदी जी की सरकार बनी, पहला निर्णय था हमने बनाई, पहला निर्णय। दूसरा निर्णय था कि हम लोगों ने, आज ये कहा गया कि राउंड ट्रिप इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं, उस पे आप क्या कर रहे हो? सारा पैसा तो सोने में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में है। आपने तो उसके खिलाफ भी कुछ नहीं किया। अब मैं बताता हूं हम लोगों ने क्या किया। Demonetization is not the only step that we have taken. We constituted the SIT. Since 1996, these double taxation avoidance treaties were under renegotiation with Mauritius. Every time MPs like Mr. Salim used to say, recall the treaty. Since 96, it was not done. In the year 2016, all the 3 treaties which provided for a facility for round tripping and Indian money coming back and no tax to be paid. The first was Mauritius, the second was Cyprus, the third was Singapore. These were the mother of all round tripping exercises. It is our government which has withdrawn and rewritten all the 3 treaties. You didn't do any step in this direction. Adhiranjan ji,
कृपया भाई, nothing will go on record except finance minister reply. Sir, we brought in a harsh black money law for foreign assets. People who have been detected in this Panama and in the HSBC accounts, Liechtenstein accounts, each one of them has been investigated, prosecutions launched in each one of them. Not a single case, except if somebody was found. No, Adhir Ranjan ji, it is unfair. No case. No, कृपया बैठिए. Mr. Mohammed Salim, you must know the legal procedure. And I think it's time you also rose, you're a very seasoned parliamentarian, rose above slogans, because the suggestion you are making, if not implemented properly, will help the tax evader. And I'll show you how. All cooperation treaties internationally have a particular clause. We have now undertaken negotiations at G20, where G20 has agreed, and that's 95% of the global economy, that in assets held by members of one country, citizens in another, information will be provided. We have signed the FATCA agreement with the US, which not only applies to the US, but all other countries who are signatories to FATCA, that any expenditure undertaken by Indian citizens outside and vice versa in real time will be informed. We have now entered into an agreement with Switzerland, which was the mother of all secrecy, wherein from 2019, details with effect from 2018, India and Switzerland will mutually agree with each other. So we have entered into each one of those agreements, including our earlier agreements. There is one condition. And the condition is that the disclosure of identity of the person, the account holder, can't be made at the investigation stage. It can only be made to a court when a criminal prosecution is filed. Now don't divert the subject. कृपया बैठिए. No, Adhir Ranjan ji, please sit down. Don't indulge in names dropping, Mr. Chaudhary. Just because you know 5 names, you are just dropping the names. What did you do in this regard? Now, No, कृपया बैठिए. angry, the whole country should be angry with you for not having done anything. कृपया बैठिए. Please sit down. So all cases, so when a Adhir Ranjan ji, please sit down. Please sit down. when a populist demand is being disclosed, the names can be disclosed only when the case is filed in court. If we breach that agreement, future cooperation will stop and the tax evader will benefit. So don't give the suggestion that without filing a prosecution in court, disclose the name. Now I'll give you an example. Salim ji. We have disclosed, so all names, sir, all names of prosecutions which have been filed are now in public domain. Now I'll give you an example of how, sir, the UPA functioned. When Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, they passed a law on Benami property. अरे देश को जानने दो खड़गे जी आपने इतने साल से क्या किया 1988 से नियम नहीं बने, हमने वो कानून बदला, नियम बनाए और उसमें पहले नोटिस भी चले गए. सो अगर आप 99 से 2004 तक क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? प्लीज sit down. किसको बचा रहे थे कांग्रेस किसको बचा रही थी नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है. कृपया बैठिए. It is not going on record. कांग्रेस बचा रही थी काले धन वालों को. No, अध्यक्ष जी जितने कदम इस सरकार ने उठाए हैं और ये डिमोनेटाइजेशन का भी जो कदम है, ये सरल निर्णय नहीं था.
आपको ये विषय उठा कि आरबीआई के साथ इसकी जो कंसल्टेशन थी वो फरवरी 2016 में आरंभ हुई। ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं था, इसकी तैयारी भी आरंभ से होनी थी। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीरीज ऑफ मीटिंग्स होती थी। एक स्टेज ऐसी आई कि सप्ताह में एक बार मीटिंग होती थी, क्योंकि इसमें सीक्रेसी, गोपनीयता आवश्यक थी, तो निर्णय लेने की एक प्रक्रिया थी। आरबीआई ने जो करेंसी अप्रूव की, जो वैकल्पिक करेंसी छापनी शुरू की, मई 2016 में आरबीआई बोर्ड ने वो रेकमेंड किया। उसके डिजाइन्स गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने उस वक्त अप्रूव किए, तो इसलिए ये पूर्व निर्धारित थी। अब निर्णय करने के बाद 8 तारीख को रिकमेंडेशन, वो कानूनी प्रक्रिया थी। जब हुआ, हर रोज इतना सरल निर्णय नहीं था। दिस इज द लार्जेस्ट करेंसी रिप्लेसमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 86% currency is to be replaced. Every day RBI was injecting new currency. Please listen now, please listen. Sir, every day RBI was injecting a certain amount of liquidity into the market. Every day. Obviously there is bound to be a lot of rush on the first few days, and thereafter it came under control. अब ये तर्क देना, अब शशि थरूर या नहीं है, the ATM operates on the size of the note, on the weight of the note, and on the thickness of the note. So his argument is, you should have brought in the same weight, the same size, exactly to the nearest measure as the original currency was. Now, if the currency is different, you will have to reactivate the ATMs accordingly. It's a manual exercise, it will take some time. But I must say that the whole country patiently cooperated with us. The fact that such an exercise took place, despite the only people troubled was the Indian opposition, not the people of India. The opposition was confined only to parliament and not on the streets. No, please, Suresh, no, please sit down. It is not going on record. Please sit down. Now some fascinating figures have come in. Some fascinating figures have come in. Reserve Bank can only print 300 crores. The Government of India and the Reserve Bank can only print 300 crores in a day. After all, if almost 10 lakh crores has been replaced in a period of less than 3 months. No, please sit down. Venugopal ji, please listen. And therefore, there have been days. Sir, let me tell you. अब तो आगे खाली पैसा मार्केट में ज्यादा बैठो ना, आगे सुनो। Sir, it will depend on the value of the currency. If it is 2,000, there will be X value. If it is 1,000, it will be lesser value. But every day what Reserve Bank is printing is several thousand crores. So let us not be under the impression that we invent a 300 crore figure and then keep highlighting the fear, because that is the reason why Reserve Bank has succeeded in keeping the liquidity into the market. Slowly but surely, they have provided adequate liquidity into the market. And this has been coupled by also a movement towards digitalization, which has also helped as far as this regard is concerned. Sir, Shashi Tharoor relied on some parts of the economic survey. Now, survey is an objective document. It's prepared by the Chief Economic Advisor. The document itself says there would be some short-term impact, but in the medium and the long term, it will expand the size of the GDP, make the India's economy far bigger and cleaner. That is what the economic survey says. So you don't, like Premchandran doesn't read the inconvenient part of section 26,
Shashi Tharoor doesn't read the inconvenient part of the economic survey and just reads the first half a sentence and says, my whole argument is based on misreading half the sentence itself. Sir, there have been arguments which have been raised with regard to the district cooperative banks. Now, some of these banks are really regulated by NABARD and not by the Reserve Bank directly. But even during the demonetization period, for some period of time, deposits were prohibited. But they were earlier being injected liquidity by the NABARD itself so that they could carry on their operations. And now with every restriction that the Reserve Bank has lifted, except that 24,000 rupees a week, all other restrictions have been lifted with regard to the banking system. And that is the same provision which applies as far as district cooperative banks are concerned, and they have now come at par in their operations as far as the banks are concerned. Sir, having said this, I do believe that there are a large number of long-term advantages as far as the Indian economy has of the demonetization. We are proud of the fact... Adhir Ranjan ji. He cannot. No, please sit down, Adhir Ranjan ji. Sir, once the Reserve Bank of India completes the exercise, well, it's a... Oh, Adhir ji. No, he's replying. No, listen, please. Well, I think... No, it is unfair. Well, the quantum of currency that the RBI must have received must be very large. It is much larger than the size of the Congress Parliamentary Party, so it will take some time. No, please sit down. No, please. आप कृपया बैठ जाइए. Sir, I have already explained. Sir, I have already explained why this ordinance is necessary in order to give the legal effect to the decision. With these observations, I commend this bill to the House for acceptance.